Very good morning. Good morning, ma'am. Okay, so if everyone is comfortable, we can start. Yes, ma'am. All right. So shall we start with you, Likita, if you are ready? Okay, ma'am. All right. So good morning, Likita. Please introduce Good yourself. morning. Good morning, ma'am. My name is Pokala Likita. I am from Kadapa of Andhra Pradesh, which is famous for Gandikota Canyon, which is also called as Grand Canyon of India. Coming to my hobbies, I practice yoga. I also enjoy visiting places which are nature-rich green environments, which helps me focus. And coming to my education, I hold a master's degree in agriculture entomology from University of Agriculture Sciences, Dharwad. Later, I also worked as a teaching assistant in Acharya Enjiranga Agriculture University, Tirupati. In my family, I have my mother, father, elder sister, and me. That's all about me. All right. So since you have done masters and you already have taken a teaching experience, so why don't you go forward in that very field, like in the field of research or being a PhD and then being a professor? Why do you want to be an AFO? Ma'am, actually, with the interest in agriculture itself, so I took MSc. But after my completing my MSc, I was in need of a job, so I joined teaching job. But it was only it is purely contract basis job. And after finishing my contract period, I left the job. And I really want to secure agriculture field officer job because I want to pursue due to job insecurity also, and also I want to pursue my career in banking sector along with, and also I chose this agriculture field officer because I can also help farmers with this sector. All right. So, completing your master's from entomology, can you name any two insects that are beneficial to mankind? Yes, ma'am. There are many many natural enemies which are natural enemies for insect pests. Example is ladybird beetle, and also many grasshoppers also eat insects. Okay. All right. So, have you heard about UPI, which people are using nowadays increasingly? So, what is that? Ma'am, can you repeat the question, ma'am? I'm sorry. Sure. Okay, sure. I'm asking, have you heard about UPI? What is that? UPR, ma'am. UPI, Unified Sorry. Payment Interface. Yes, ma'am. I heard about the UP. Okay, so what is it? Can you Um, explain? UPI is provides an online platform through which we can make transactions very fast and easily to any other persons, or also to the persons which have bank accounts in another banks as well. We can make faster payments through online. Okay. So, in banking sector, there's something called cash reserve ratio, which is CRR. Are you aware about that? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, what Uh, is that? cash reserve Cash reserve ratio is certain percentage of money which the bank has to maintain in cash form with the RBI, so that the RBI can maintain liquidity in the economy. Okay. So, you mentioned about RBI. What is the role of RBI? Ma'am, RBI is the considered as the central bank of India, and also it is considered as the bank of banks. The main role of RBI is to regulate the liquidity in the economy by controlling it also has role to control maintain inflation, and it can also it can also monitor the liquidity in the economy. All right. So, in your area, particularly talking about the place in which you are residing right now, what are the famous crops that Yes. you have seen? Ma'am, in my area, there is a Penna River which flows in my area. So the regions which are adjacent to Penna River grow rice mainly, and the other regions which are certain dry regions grow groundnut. All right. Can you name any two popular varieties of groundnut with their speciality?
Yes, ma'am. Kadiri 6 is a variety which is popularly grown in my region. It also has certain drought tolerant capacities. And recently in my university there is a new variety released by recently released variety which is also inaugurated by our Prime Minister Narendra Modi ji, with the variety is called as Konark, ma'am. It has around 49% of oil content and it can tolerate stress and drought conditions as well. All right. So coming to the last question, have you heard about Pradhan Mantri Mudra Yojana? If yes, what is that? Ma'am, Pradhan Mantri Mudra Yojana, I heard about it. It provides loans to micro, small, and medium enterprises. Uh, mm, Okay, it has a certain slabs of providing the loans. Are you aware about those slabs? yes, ma'am. It provides loans through four Hmm. regions. What is Sishu, Kishore, Tarun, and Tarun Plus loans, which has money limits, ma'am. All right. So Uh, the answering capacity of yours is very good. You have knowledge as well. But the only thing is you are a bit nervous. You don't have to be nervous. The answers that you are giving are correct. Everything that you stated is correct. The Mudra Yojana, the limits, the recent that was which was Tarun Plus. You talked about that also. That means you are fully aware yes, ma'am. about the recent agriculture updates. But the only thing is you are lagging behind in the nervousness that you have. Okay, so if you keep Yes, practicing in front of the mirror or in front of your siblings or parents or anyone who is around you, your confidence will definitely give a boost. And the only thing that you have to work in upon your confidence. You have correct knowledge. You have a brilliant knowledge as of talking about agriculture, the banking sector, everything. Just work upon your confidence, and you will give your best. yes, ma'am. Thank you, ma'am. All right. Ma'am, can I have a question? Can I ask you a question? Sure. 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 Ma'am, in last year interview, they have asked about my bank preference, ma'am. Actually, I didn't give much attention to preference. I have kept Canara Bank as first and Union Bank as second. The interviews were held in Union Bank, so they have asked why did you choose Canara Bank as your first option like that, ma'am? How can I answer such question? All right. So in this case, you can give two answers basically. First one is, like you stated honestly, that sir, while choosing the preference, I didn't choose as per my preference because I am still not in the banking industry, so I'm not aware about that. I just choose as per the vacancies availability. If the choices that you have filled are as per the vacancies, like for example, PNB give most of the vacancies. So if you have filled PNB at Yes, first, so you can say that it was as per the vacancies availability. And the second answer could be, which most of the people give, that could be because sir, I have my account in that bank. So particularly, I just uploaded that as my first preference. So basically, if you ask my opinion, you can, if you have a bank account in that bank, you can say that, sir, I have the bank account in that particular bank. So without thinking twice, I just opted that as my first choice. okay, ma'am. Thank you, ma'am. All right. So next we have Saloni. Ma'am. Yes, Okay. ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Please introduce yourself, Saloni. My name is Saloni. I belongs to Yamunanagar district, which is known as Plywood City and Paper City of Haryana. I have completed my BSc Honours Agriculture from Chaudhry Charan Singh Haryana Agriculture University, Hisar, Haryana. In my family, we are four members. My father is a farmer, and my mother is a homemaker, and my younger brother. My hobby is henna art, and my interest is painting and reciting poetry. I'm very hardworking person and I have good adaptation skills. My weakness is I'm little bit overthinker and I cannot be free for longer time. Thank you. All right. One thing that you mentioned, Saloni, that you are really hardworking and you have that zeal of working, right? So, being an AFO, you will have to work for longer hours as well as you will have to go for field visits. So, that kind of hardworking can sometimes be frustrating as well. So, how will you manage that?
Actually, I am habitual to it. As I told in my weakness also, I can't be free for longer. I need something to do. So that's why I think I can manage this. All right. I'm adaptable to do work for longer hours. All right. And one more thing that you mentioned that sometimes you do overthink, right? So sometimes bank's environment is kind of stressful, like in the month end or year end, it is stressful, right? So if unfortunately your seniors out of rage or anything out of stress say something to you, then will you overthink about that or how will you overcome that? Ma'am, I'm working on it through meditation and yoga, and it is improving. Okay, very beautiful. All right. So have you heard about Agriculture Infrastructure Fund? Yes, ma'am. Uh, it is for it is for um, uh, uh, processing units or storage houses. Farmers can take loan and they can build their maximum limit is I think 1 crore, which farmer or self-help group can buy. Okay. What is the interest percentage in this Agri Infrastructure Fund? Sorry, ma'am, I forget that now. All right, no problem. So have you heard about Fasal Bima Yojana? Yes, ma'am. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. Ma'am, it is crop insurance schemes. It a scheme. It provide insurance. For this, farmers have to pay certain percentage of premium. For Kharif, it is 1.5%. For it is 2%. For Rabi, it is 1.5%. And for horticulture and commercial crops, it is 5%. Okay. Can you explain the difference between a current account and a savings account? Yes, ma'am. Current accounts mainly used by business person. In current account, we have no limit for withdrawing money withdrawal. But in savings account, we have limit for withdrawing money. But interest rate is provided in savings account, not in current accounts. Okay. And what about RTGS? What is RTGS? Sorry, ma'am, I'm not aware of that. All right, no problem. Okay. So recently, or you can say in the last year, government was focusing much upon the millets, upon the usage because the nutrition quality in millets is very profound. So talking about the millets, they used one word for that to addressing the millets around the country. So are you aware of that word which was given to the millets? Yes, ma'am. What was that? Shri An. All right. Shri An. And all right. And can you state the kind of millets that you have studied in your graduation? Ma'am, majorly pearl millet and sorghum. Okay. Can you state the botanical names for them? Per millet, it is Panicetum glaucum, and for sorghum, it is sorghum bicolor. Also, I have studied about some minor millets. Okay. All right. So have you heard about Manrega scheme of government? Yes, ma'am. Recently, it is in news because its name has been changed to G Correct. Ramji scheme. Ma'am, Manrega scheme provide employment guarantees initially for 100 days, but now it is changed to 125 days, and it provide um, in case of natural calamities, it can provide employment for 150 days also. It is majorly operated in rural areas. Okay. Okay. Have you heard about SLR, statutory liquidity ratio? Yes, ma'am. Ma'am, certain amount of fund bank have to maintain in liquid form to itself. For example, in terms of gold or um, in government securities form for security purposes or for maintaining cash. All right. And what are Kisan call centers and what are they used for? And Kisan call centers are developed for helping farmers. Farmers can call at Kisan call center and inquire about various queries regarding sowing time or seed rate or pest or regarding disease. It is available in 23 languages and it is available from 9 a.m. to 5 p.m. After that, it is available in uh, automatic form. I forget specific name for that. All right, Saloni.
Your agriculture knowledge is very apt, but the only thing that you have to work on is your banking terminologies. You stated correctly about the current account, savings account, and also about the RTGS, sorry, the thing that I asked. But one thing that you lacked was explaining about RTG. much about UPI and RTGS thing. So that you have to work upon because these are some basic terminologies that can be asked. All right, so just study about the banking terminologies. The schemes knowledge, you have good knowledge on the schemes and you have updated knowledge as well, but banking terminologies you need to focus. Thank you, ma'am. All right, Akash, Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. good afternoon. Can we start if you are comfortable? Yes, ma'am. Absolutely. All right, so please introduce yourself, Akash. Yes. Ma'am, my name is Akash Sharma. I am from Bhind district of Madhya Pradesh, famous for mustard cultivation. I have completed my bachelor's in agriculture from Banaras Hind University in 2022 and master's in agronomy from Rajendra Prasad Central Agriculture University in 2024. And ma'am, my hobby is reading and writing poetry. Thank you. All right. So, as you told that recently you have completed your master's. So, you have many Yes. other options like going for research work, going for PhD. So, why not you are going for higher studies? Ma'am, doing MSc was my personal choice. I have done it to deepen my knowledge and give me more practical knowledge to tackle farmer problem very in a easy way and communicate with them in a very easy language. Ma'am, there is no doubt that bachelor provided me with good terminology skills and basic knowledge, but but enrolling in masters had strengthened my communication with farmer and provided me structured and impactful way to communicate with the farmers and provide them with timely credit. So I have choose banking as a career Okay. instead of So, going for PhD. all right. Very beautiful. So, being an AFO, what duties do you have towards the bank? I'm not talking about the farmers, particularly towards Yes, the bank. Being an AFO, what role do you have? yes, ma'am. Ma'am, AFO act as technical backbone for banks agriculture lending. So, ma'am, as an AFO, my role would be to strengthen the agriculture portfolio of bank and reduce the agriculture NPA by doing the right study of the proposal given by the farmers and reducing the NPA. All right. You talked about NPA. So, can you explain what is NPA? Yes, ma'am. Ma'am, NPA is non-performing asset, which is if a borrower takes a loan and there is no payment of principal or either interest for 90 days, then we termed it as a non-performing asset. All right, okay. Yes, ma'am. Supposedly, a farmer comes to you and he's already a defaulter. So Yes, ma'am. he is willing to take a loan, but you have checked his credit history and everything. He comes out to be a defaulter. So how would you tackle that situation? Ma'am, if he is a defaulter, then ma'am, the civil history will be not very good as par to give the loan. So, ma'am, as keeping my role as an AFO, I will not allow him to take loan because it will only create NPA further. If project is viable or good, then I will talk to authority about that. And if authority allows me to give the loan, then I will go for it, go for to give it proposal. Okay. Have you heard about Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana? Yes, Okay, what is it? ma'am. Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana was launched in 2020. Ma'am, the main aim of this scheme is to enhance the fish production in our country. And ma'am, there are some aim of this scheme like to increase the fish production to 22 million ton and the productivity of fish to 5 ton per hectare. And ma'am, to reduce the post-harvest losses from 20% to 10%, and to ma'am increase the per capita fish consumption from 6 kg
per annum to 12 kg per annum. This was the main aim of this scheme. All right. And what about Krishi Sinchai Yojana? Yes, ma'am. Ma'am, Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana is a central sector scheme which was launched in the year 2015. I'm not sure it is 16, ma'am. In 2015, ma'am, sure here. It was launched in 2015. The main aim of this scheme was to increase the irrigation area and to increase the irrigation efficiency on the field of farmers. Mainly, it has four components: agriculture accelerated irrigated benefit program, हर खेत को पानी, per drop more crop, and watershed development component. All right. So, in these schemes, you stated two things that central sector scheme and centrally sponsored scheme. What is the difference between the two? Ma'am, this term mainly defines the financial support given by the government. If it is centrally sector scheme, then all the financial outlay will be given by central government. And if it is centrally sponsored scheme, then it will be shared between central and state government. All right. Recently, KCC limit was changed, updated. Yes, So, ma'am. are you aware about the Yes, updated limits? yes, ma'am. Okay. What is it? If we talk about collateral free loan, earlier it was 1.6 lakh, but now it is enhanced up to 2 lakh. And if we talk about modified interest subvention scheme limit, it has been extended to 5 lakh rupees. Okay, all right. So Akash, it was really brilliant. Your interview was really Thank nice, and your answers are thank you. also good. One thing that Yes, you got confused in while I was asking about the scheme and the year you got confused about. yes, So ma'am. Yes, if ma'am. you get just it's a suggestion to you that if you get confused, अगर वहां पे भी आपको ये confusion होता है, तो आप एक जी, बार बोल के रुक जाना और उसके बाद उनको ये स्टेट कर देना कि सर आई एम गेटिंग कंफ्यूज, इट माइट बी 15 और इट माइट बी 16। अपना आंसर चेंज मत करना, आप उनको बता देना ओके, दैट आई एम गेटिंग कंफ्यूज ओवर हियर। क्योंकि आप ओके दो मैम। तीन बार अगर 15 16 15 बोलोगे ना, तो फिर वहां पे आपको घबराहट हो जाएगी, वहां पे आपको एंजाइटी होने लगेगी, आप आगे का आंसर भूल जाओगे। क्योंकि आपको आती थी जी, वो स्कीम, बट आप ईयर की वजह से कंफ्यूज होके आप फंबल करने लगे वहां पे, राइट? तो यस आप मैम। वो चीज वहां पे सिर्फ ये बोल देना कि सर मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है। और अगर आपको अपने माइंड में पहले से कंफ्यूजन हो तो ईयर बोलना मत। अगर आपको लगे तो आप ईयर मत बोलना, अगर वो आपसे स्कीम पूछे तो आप सिर्फ इतना बता देना कि स्कीम में होता क्या है। ईयर मैंडेटरी नहीं है, अगर वो पूछे तो फिर आप बता देना। ओके रेस्ट एवरीथिंग वाज फाइन। मैम, एक डाउट था मेरा। हाँ जी। मैम, जब मैम जो पैनल होगा 4 मेंबर या 5 मेंबर का, तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको ही आई कांटेक्ट रखना है या फिर अपना आईज को रोटेट करना है? नहीं, आपको आइज को रोटेट करना है, क्योंकि क्वेश्चंस आपसे सारे ही लोग पूछ भी सकते हैं या फिर आपसे दो तीन लोग भी पूछ सकते हैं, राइट? लेकिन जब आप आंसर करोगे तो आपको सबको देखकर आंसर करना है। दे डोंट फील कि आप मतलब एक ही को आंसर कर रहे हो या ऐसा करके। आपको रनिंग आइज रखनी है, थोड़ा 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 देर ओके, सबसे कांटेक्ट रखिए आप। जिसने पूछा है स्टार्ट ओके, आप उनसे करो, और बाकी फिर सबको देखते रहो। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबको मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. तो इफ आप सब कंफर्टेबल हैं तो वी कैन स्टार्ट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। आशुतोष, कैन वी स्टार्ट विद यू? Yes, ma'am. ओके, ऑलराइट। गुड आफ्टरनून आशुतोष, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Ma'am, my name is Ashutosh Rath. I am from Bhubaneswar, Odisha. I have done my graduation from Shiksha Anusandhan University from Institute of Agricultural Sciences. Uh, ओके। तो आशुतोष, आप क्यों एएफओ क्यों बनना चाहते हैं? मतलब आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज है जो आपको एक एएफओ के रोल के लिए सूटेबल मानते हैं अपने लिए? ma'am, can I? Hello? हाँ, एम आई ऑडिबल? No, ma'am. क्या आप रिपीट कर सकते हैं? हाँ जी। मैं ये पूछ रही थी कि आप में ऐसी क्या क्वालिटीज हैं जो आप अपने आप को एक एएफओ बनने के लिए सूटेबल मानते हैं? मैम, being
आशुतोष, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। हेलो। हाँ, अब आ रही है। हेलो। हाँ हाँ, अब आ रही है आवाज। हाँ मैम, एफओ के बनने के लिए मेरे पास जो क्वालिटी है वो है being compassionate, having a skill of interaction with the farmers during my graduation. That's all. ओके। तो आशुतोष, आपने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में सुना है? Yes, ma'am. हाँ, प्लीज एक्सप्लेन दैट। The repo rate is a process where RBI, where bank park their certain amount of money in the Central Bank of India, that is RBI, and in reverse repo rate where RBI park its money in the nationalized bank. ओके। आशुतोष, आप पार्क वर्ड यूज मत कीजिएगा, आप लेंड वर्ड यूज कीजिएगा। Yes, ma'am. कि आरबीआई जिस रेट पे लेंडिंग करता है वो, और बैंक जिस रेट पे वो करते हैं। आप पार्क वर्ड यूज मत करिएगा वरना वो सीआरआर में चला जाएगा कि Yes, आरबीआई ma'am. इंस्ट्रक्ट करता है पार्क करने के लिए फंड। ओके, ऑलराइट। सो आप आरटीजीएस और एनईएफटी का डिफरेंस बता सकते हैं? मैम आरटीजी इंस्टेंट मतलब 24 आवर इंस्टेंट में होते हैं, और नेप जो होता है वो थोड़ा बिगर अमाउंट के लिए 24 आवर बिगर अमाउंट के लिए यूज होता है नेप। ओके। किसान मत्स्य संपदा योजना के बारे में आप बताइए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। मैम इट इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम हैविंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सॉरी मैम, आई कैंट रिकॉल। ओके, कोई बात नहीं। ऑलराइट। तो इन केस आप एक एएफओ बन जाते हैं एंड कल को आपके पास कोई फार्मर आता है जिसकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब है, वो आप उसको लेंडिंग नहीं दे सकते, बट ही इज इंटरेस्टेड टू टेक अ लोन। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? मैम आई विल कंसल्ट विथ माई सीनियर। ओके। ओके आशुतोष, अ, आपको आंसर्स आते हैं, जैसे आपने आरटीजीएस और एनईएफटी के बारे में बताया, आप थोड़े से कंफ्यूज थे। आप शायद थोड़ा सा घबरा रहे हैं या थोड़ा सा नर्वस हो रहे हैं। आपको मिरर के यस सामने ना प्रैक्टिस करना है। आप जितनी प्रैक्टिस मैम। करेंगे उतनी क्लैरिटी आएगी आपको। और दूसरा, बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज आपको अच्छे से पढ़नी है। एंड सेकेंडली, स्कीम्स में आप थोड़ी सी क्लैरिटी लाइए। ये दोनों ही चीजें हैं बेसिकली जो पूछी जाती हैं। बाकी जो जनरल क्वेश्चंस हैं उनके आंसर तो आप अपने मन से बनाकर दे सकते हैं, बट जो बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज हैं कुछ, और जो मेजर मेजर स्कीम्स हैं, उनकी आपको क्लैरिटी होना जरूरी है कि आपसे पूछा जाए और आप इंस्टेंट जवाब दे दें। ऑलराइट। हम्म। तो आप थोड़ा सा उस चीज पर वर्क करिए, आप प्रैक्टिस करिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपको क्लैरिटी आएगी। मिरर के सामने यस मैम। प्रैक्टिस करिए, पेरेंट्स या सिबलिंग्स किसी के सामने भी प्रैक्टिस करिए। बट आपके पास अभी काफी टाइम है, आप वर्क कर सकते हैं उस चीज पर। यस ओके, ऑलराइट। अमित। Yes, ma'am. Am I audible, ma'am? हाँ, यू आर ऑडिबल। Ma'am, may I introduce myself? या श्योर। Good morning, ma'am. My name is Amit Singh. I'm from Harday, Uttar Pradesh. I have done my graduation in BSc Agriculture Honors from Sharda University, Greater Noida. And if I talk about my hobbies, I like to watch the highlights of badminton and cricket matches whenever I get some time. ऑलराइट। सो आपने बोला कि आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, लाइक बैडमिंटन। तो हुज योर फेवरेट प्लेयर इन बैडमिंटन एंड व्हाई? आपको उनकी क्या क्वालिटीज पसंद है? मैम करंटली अगर इंडिया लेवल पे बात करें तो मेरा फेवरेट प्लेयर है लक्ष्य सेन, जो खुद उत्तराखंड से हैं और उनकी रैंकिंग 14 है। और मैम वो इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि उनके अंदर एक एबिलिटी है, कितना भी मतलब कि आप सॉरी मैम, कितना भी आप लाइक आप हार मान जाए लेकिन वो गिव अप नहीं करते हैं, वो फिर एफर्ट्स लगाते हैं
अभी उनकी फॉर्म थोड़ी वीक हुई थी, लेकिन अभी इम्प्रूव करके उन्होंने अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है मैम। ओके। तो आप अपने अंदर क्या कुछ स्ट्रेंथ्स और क्या वो वीकनेसेस देखते हैं, जो अगर आपसे पूछा जाए कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, तो आप दो दो ऐसी कौन सी क्वालिटीज बताना चाहेंगे? मैम मेरा जो पहला स्ट्रेंथ है, जैसे मेरा बैकग्राउंड है, पापा का बैकग्राउंड डिफेंस बैकग्राउंड से है, तो हम हर जगह गए हैं, लगभग हर स्टेट में गए हैं। तो अडेप्ट होना पड़ता है, नए नए स्कूल जाने पड़ते हैं, नई नई जगह अडेप्ट होना पड़ता है। तो एफओ में भी कहीं ना कहीं अडेप्टेबिलिटी का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो तो मेरा एक तरीके का है कि मैं अडेप्ट हो सकता हूँ कोई भी सिचुएशन में। और मैम सेकंड थिंग है कि मेरा टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा अच्छा हूँ, मैं टाइम मैनेजमेंट कर लेता हूँ, अगर कुछ आगे पीछे हो जाए तो फिर किसी चीज़ को एडजस्ट करके उसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ मैम। और मैम वीकनेस, मैम टू बी ऑनेस्ट अभी प्रिपेयर नहीं किया है मैंने वीकनेस। ओके, कोई बात नहीं। देखो, मैं आपको और बाकी सबको मैं ये चीज बता दूं, इन केस आपसे वीकनेस पूछी जाती है तो आपको ऐसी कोई चीज नहीं बोलनी है जो नेगेटिव एस्पेक्ट शो करे आपका। आप ऐसी चीज बोल सकते हो कि मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है, ये आपकी वीकनेस है, बट ये कोई बुरी चीज नहीं है। राइट? मीठा खाना इज नॉट बैड, इट इज बैड फॉर हेल्थ एक लिमिट तक, लेकिन आप उसके आगे ये बोल सकते हो, जैसे कि किसी को चाय पीना बहुत पसंद होता है, किसी को मीठा खाना बहुत पसंद होता है, तो आप ये बोल सकते हो कि मुझे चाय पीना बहुत ज्यादा मतलब पसंद है, मैं चाय बहुत ज्यादा कंज्यूम करता हूँ, बट मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ और टाइम के साथ साथ आई विल वर्क अपॉन इट। तो आप ऐसे बोल सकते हो। मैम ये सच भी है। ओके, तो आप फिर यही वीकनेस अपनी बोल सकते हो। यस मैम। ऑलराइट, अमित, हाउ विल यू हेल्प टू इंक्रीज अ फार्मर्स इनकम? मैम मैं उनको एलाइड सेक्टर्स जो होते हैं, जैसे क्रॉप प्रोडक्शन तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर वो पोल्ट्री वगैरह में इन्वॉल्व हों और बी कीपिंग वगैरह में अगर उनके एरिया से रिलेटेड अगर वो फंक्शन करता है, उनको सपोर्ट मिलता है, तो अगर वो डाइवर्सिफाई करें अपने इनकम को, तो कहीं ना कहीं उनका इनकम जनरेशन में फ़ायदा होगा और वो सेल्फ सफिशिएंसी की ओर जा सकते हैं। ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूपीआई? Ma'am, it's a unified payment system, and it was developed by NPCI, National Payment Corporation of India. इससे जो मैम हम इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर काफ़ी इजीली कर सकते हैं, और ये इनेबल करता है कि आप इवन फार्मर्स भी इसको इजीली विदाउट एटीएम, विदाउट बैंक वगैरह विजिट करे बिना आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सस्टेनेबल एग्रीकल्चर? मैम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मतलब होता है कि हम अपना क्रॉप प्रोड्यूस करें, लेकिन फ्यूचर को देखते हुए भी कि जो फ्यूचर जनरेशन होगी उनके पास भी कुछ रहना चाहिए, और क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ हमारा इन्वायरमेंट भी सेफ हो और हमारी सॉइल भी सस्टेन रहे। तो हम ऐसे ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करें ताकि वो ख़राब ना हो, और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो रहना चाहिए मैम। Okay. So one last question. What is the role of RBI in the economy of the country? आरबीआई जो है वो एपेक्स बैंक है, उस बैंकर्स और बैंक्स भी कहा जाता है आरबीआई को। तो आरबीआई है जो सबको रेगुलेट करता है, चाहे कोई भी बैंक हो, नाबार्ड हो या फिर आरआरबी हो, सबको ही रेगुलेट करता है। तो कहीं ना कहीं वो रिफाइनेंस भी करता है, बैंक्स को रिफाइनेंस देता है, और एक डेवलपमेंट बैंक की तरह भी कहीं ना कहीं काम करता है। इंडिया लेवल पे कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ग्रोथ करना हो उस लेवल पे, और सपोर्ट करता है किसी भी तरीके की स्कीम आ रही हो नाबार्ड के थ्रू। ओके, अमित, आपको नॉलेज है सारी, काफी आपको स्कीम्स और सारे टर्म्स की नॉलेज है, बट एक चीज, आप आई कांटेक्ट भी मेंटेन करना। आप शायद थोड़े से नर्वस हो अंदर से, इस वजह से आप आई कांटेक्ट लूज कर रहे हैं। वहां पे 5-6 पैनल मेंबर्स होंगे, आप एक को नहीं, आपको रनिंग आईज से सबको देखना है, बट देखते रहना है, इधर उधर आपको नहीं देखना है, आई कांटेक्ट आपको उन्हीं लोगों से रखना है। ऑलराइट, ये पहला पॉइंट। मैम एंड मैम जैसे आई कांटेक्ट करना है तो मैम जैसे जिसने क्वेश्चन पूछा है तो उन्हीं से करना है कि बाकी सबसे भी करना है? नहीं, देखो, जिसने आपसे क्वेश्चन पूछा है, आपको जब आंसर करना है तो आपको स्टार्ट उनसे करना है,
बट कनेक्टिविटी सबसे मेंटेन रखनी है। आपको रनिंग आइज में सबको देखना है, स्टार्ट उन्हीं से करना जिन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, बट आपको रनिंग आइज में सबको Yes, ma'am. देखना है। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जिसने Mm. पूछा आप सिर्फ उन्हीं को रिस्पॉन्ड कर रहे हो। आप कनेक्टिविटी सबसे रखो, सबको देखो, सबसे कनेक्टिविटी रखना। ओके। एंड आपके पास अभी टाइम है काफी, अभी इंटरव्यू शेड्यूल नहीं आया है, तो आप प्रैक्टिस करना। डेफिनेटली आपका इंटरव्यू अच्छा होगा, बस आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करते हुए चलना है सबसे। एंड अगर आपको कोई आंसर आधा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है तो आप वहीं स्टॉप कर देना। बस उसके आगे ये अपने एक्सप्रेशन से आपको शो नहीं करना कि मुझे इसके आगे का नहीं आता। जितना आप अभी बोल रहे हैं उतना सफिशिएंट है। Okay, ma'am. Okay. ऑलराइट। ओके। मैम विजय। हाँ जी, हाँ जी। मैम मैम एक रिक्वेस्ट है मैम, आफ्टर 20 आप एक इंटरव्यू शेड्यूल ले सकते हैं क्या? क्योंकि अभी जो नाबार्ड और आरआरबी का जो ये एग्जाम है, इसलिए हम्म, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो अच्छा, रहा है ओके। मतलब। ओके फाइन, मैं शेड्यूल कर दूंगी। एंड ग्रुप में मैं अपडेट कर दूंगी, टेलीग्राम ग्रुप पे आई विल अपडेट। थैंक यू मैम। ओके। विजय। ओके, इफ यू आर कंफर्टेबल कैन वी स्टार्ट विजय? Hi, yes, ma'am. ओके, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Good afternoon, ma'am. My name is Vijay Shamsundar Kausat. I am from Bid, Maharashtra. I have completed my graduation from MPKV Rauri. Currently, I am pursuing my master's degree of agriculture in entomo entomology. और मेरे हॉबीज में इन माय फ्री टाइम मैं क्रिकेट देखना, क्रिकेट खेलना और ट्रेकिंग करना पसंद करता हूँ। ओके। विजय, आपने मास्टर्स भी किया है, राइट? मैम आई एम करंटली परसुइंग सेकंड ईयर में। ऑलराइट, ओके। तो आफ्टर मास्टर्स, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है, यू आर स्टिल डूइंग योर मास्टर्स, सो व्हाई डोंट यू गो फॉर हायर स्टडीज? व्हाई डू यू वांट टू join a government sector job, and why not going for higher studies? मैम इन महाराष्ट्र मतलब देर इज मतलब कम स्कोप है रिसर्च को आगे के लिए, और एक ओके। जॉब सिक्योरिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए है, और मतलब एक फार्मर और रूरल डेवलपमेंट के लिए मेरा पैशन है कुछ तो करने का, इसलिए ये एफओ को चूज किया मैंने। ओके, तो जैसे कि आपने बोला कि आपका वो है शौक, पैशन है कि आप रूरल वर्क कुछ करें और फार्मर्स के वेलफेयर के लिए काम करें। तो आप अभी करंट की सिनेरियो की अगर कोई प्रॉब्लम्स ली जाए फार्मर्स की, तो आप उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे बीइंग एन एएफओ? फर्स्टली एक मतलब प्रॉब्लम एक करंटली है कि मोनोक्रॉपिंग चल रहा है, और एक इम्प्रॉपर यूज ऑफ पेस्टिसाइड, और फार्मर ज्यादातर स्कीम को अवेयर नहीं है। तो मतलब ट्रेनिंग और अवेयरनेस कैंप लेके उनको मैं अवेयर कर सकता हूँ, और जो मेरा पेस्टिसाइड का साइंटिफिक नॉलेज है उससे भी उनको बता सकता हूँ कि प्रॉपर प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स लेके। ओके। व्हाट इज केवाईसी और उसका क्या यूज है? केवाईसी मतलब मैम नोन यूर कस्टमर, मतलब कि जो प्रूफ वगैरह होता है कि कस्टमर का बैंक के लिए। ओके। अभी रिसेंट में एक स्कीम आई थी, पीएम कुसुम। हैव यू हर्ड अबाउट दैट? यस मैम। हाँ जी, बताइए वो क्या होती है? पीएम कुसुम ये स्कीम है इसके लिए, सोलर एनर्जी के लिए है। हम्म। और कोई इन्फॉर्मेशन है आपको पीएम कुसुम के बारे में? सॉरी मैम, आई नो मैम। कोई बात नहीं, इट्स ओके। ओके, सो आप केसीसी के बारे में बताइए, किसान क्रेडिट कार्ड।
हाँ मैम, किसान क्रेडिट कार्ड एक ऐसी स्कीम है जिससे हम फार्मर को शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी अवेल करते हैं। और केसीसी से मतलब जो फार्मर है स्मॉल और मार्जिनल, उनको क्रेडिट दे के मतलब अ, ओके, उसमें कुछ कोलेटरल फ्री लोन की कुछ लिमिट होती है, लोन लिमिट होती है, राइट? कोलेटरल फ्री जो लोन अभी रिवाइज हुई थी वो, तो आप वो यस बता मैम। सकते हैं क्या थी वो? हाँ, पहले मैम 1.6 लाख थी, अभी ये बढ़ा के 2 लाख कर दिए मैम। ओके, ऑलराइट। तो विजय, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक एएफओ हैं एंड एक कस्टमर आपके पास आता है एंड ही इज आता है इन द सेंस, या फिर आप उसे कहीं मिलते हो एंड ही वांट्स टू टेक अ लोन बट ही इज अफ्रेड टू टेक अ लोन फ्रॉम द बैंक। उसने आज तक कभी बैंक से लोन नहीं लिया है बिकॉज वो हमेशा प्राइवेट लेंडर्स से ही लोन लेता था। उसने बैंक से लोन नहीं लिया, आप उसे कैसे भरोसा दिलाएंगे कि वो बैंक से लोन ले? आ, आ, मतलब पहले तो उसका मतलब जो प्रॉब्लम है उस पे मैं सॉल्यूशन एक ऐसा बनाऊंगा कि मैम कि अ, बैंक से लोन लेके उसको क्या फायदा हो सकता है, मतलब डिफरेंस इन कंपैरिजन बताता हूँ। रीपेमेंट के बाद भी मतलब जो मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है उससे भी मतलब उनको बता सकता हूँ कि क्या क्या फायदे है मनी लेंडर्स से और आप बैंक से क्रेडिट ले सकते, मतलब इन कंपैरिजन। ठीक है। ओके, विजय, डिजिटल एग्रीकल्चर या फिर डिजिटलाइजेशन इन एग्रीकल्चर से आप क्या समझते हैं? सॉरी, वो मैंने अभी पढ़ा नहीं ओके, है। ओके विजय, कोई बात नहीं। विजय, मुझे लगता है कि आपको आंसर्स आते हैं बट आप कहीं ना कहीं घबरा रहे हैं। आप एंशियस हैं इस टाइम, इस वजह से शायद आपको आंसर्स नहीं आ रहे हैं। बट क्योंकि जैसे मैंने पूछा, हाँ यस। डिजिटलाइजेशन एंड एग्रीकल्चर, ये चीजें बेसिक हैं, ये चीजें आपको पता भी होंगी, आपने पढ़ी भी होंगी ग्रेजुएशन में कि जब एग्रीकल्चर में डिजिटलाइजेशन हम लाते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, हाँ तो यस मैम। दैट इज डिजिटल एग्रीकल्चर। आपको आता होगा, आई एम श्योर। बट आप रिस्पॉन्ड करने में घबरा रहे हैं क्योंकि यस आप मैम। नर्वस हो गए स्टार्टिंग में, तो आप उसके बाद कोई भी आंसर्स अगर आपको माइंड में आएंगे भी तो भी वो स्ट्राइक नहीं करेगा क्योंकि आप नर्वस हैं, राइट? तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी विजय। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी। और ज्यादा बेटर ये होगा कि आप किसी के सामने प्रैक्टिस करें। अक्सर करके जिनको फंबलिंग की प्रॉब्लम होती है या फिर बोलने में जो घबरा रहे होते हैं, उनको मैं बोलती हूँ कि मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, बट आप किसी को बैठा के अपने सामने प्रैक्टिस करना, क्योंकि आई कांटेक्ट भी आपको मेंटेन करना है। तो आप पेरेंट्स हैं या सिबलिंग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कोई भी है आपके आसपास, आप उनके साथ में प्रैक्टिस करिए, तभी आपको अच्छी कमांड आएगी। और अभी टाइम है, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, आप आराम से प्रैक्टिस करिए, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा क्योंकि आपको नॉलेज है, बट आप घबराहट की वजह से बोल नहीं पा रहे हाँ यस। हैं। ऑल राइट, ओके, नाउ विश्वजीत साहू। Yes, ma'am. ऑल राइट, Good afternoon. गुड आफ्टरनून, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विश्वजीत। Yes, ma'am. Ma'am, my name is Vishwajit Sahu. I was born and brought up in Venkanal, the peace city of Odisha. Then I did my graduation from College of Agriculture, UT Bhubaneswar. About my family, we are four members: my father, my mother, my elder brother, and me. During my leisure time, I love to watch podcasts and great personality interview. I'm a optimistic, hardworking, and quick learning person in my life. ओके, तो यू टोल्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल, आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी और इन इंग्लिश? हम बहुत हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। हाँ, ओके, ऑल राइट। तो विश्वजीत, जैसे आपने बताया कि आप उड़ीसा से हैं और मेन स्टेपल क्रॉप जो उड़ीसा में होता है वो पैडी होता है, राइट? तो आप आपने अपने लोकल एरियाज में कौन सी ऐसी दो या तीन वैरायटीज देखी हैं और उनका नाम और उनकी स्पेशलिटी क्या है, मतलब किस तरीके से वो बाकी वैरायटीज से डिफरेंट हैं, इसके बारे में मुझे बताइए। यस मैम। मैम, एक तो है
हजार एक मतलब 1000 को यहाँ पे हजार बोलते हैं। हजार एक वेराइटी है जो कि हाई एल्डिंग वेराइटी है। जो कि ओयूटी हमारा उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी वहाँ पे तो डिस्कवर किया गया था। और मैम जगन्नाथ वेराइटी है जो कि म्यूटेंट वेराइटी है राइस का, वहाँ पे यहाँ पे लगाया जाता है ज़्यादातर। और उसके मैम जल मगन एक है जो कि सबमर्स कंडीशन में हाई ज़्यादा यील्ड देता है मैम। राइट। आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में सुना होगा। मुझे ये बताइए कि उसमें जो परसेंटेज प्रीमियम होता है वो कितना होता है पर क्रॉप, मतलब खरीफ, फॉर रबी एंड फॉर कमर्शियल क्रॉप्स। और खरीफ क्रॉप 2% उसका प्रीमियम रेट होता है। एंड फॉर रबी क्रॉप 1.5% रेट होता है उसका। और फॉर कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए वो 5% रेट होता है। ओके, ऑलराइट। एफपीओ और सेल्फ हेल्प ग्रुप दोनों में क्या डिफरेंस है? हम जो एफपीओ है वो फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक फार्मर ऑर्गेनाइजेशन होता है कि जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं हमारे यहाँ पे और जहाँ पे भी, वो अपने प्रोड्यूस को कैसे मार्केट में ला सकते हैं, एक ग्रुप बना के अपने मार्केट का सही वैल्यू, अपने प्रोडक्ट का सही वैल्यू ले सकते हैं, जो कि सेल के लिए होता है। और एसएचजी में हम 10 से 20 वुमेन मतलब प्रायोरिटीज वुमेन होते हैं जो कि मिलके कुछ भी प्रोडक्ट जैसे पिकल्स हो गया, जो भी ड्राई पापड़ हो गया, उसको सेल करते कर सकते हैं। ओके। तो विश्वजीत, इन केस आप कोई ऐसे एरिया में पोस्टेड होते हैं जो कि काफी रिमोट है, वहां पे फैसिलिटीज उतनी नहीं है अवेलेबल, एंड आपको सारी चीजें खुद से ही करनी है, लाइक खाना बनाने से लेकर सुबह रेडी होना जाना, एंड आफ्टर दैट मंथ एंड है, बैंक में प्रेशर है, तो आपके लिए पूरे टाइम एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, तो आप उसको हैंडल कैसे करेंगे? मैम मुझे नहीं लगता है एफओ बनने के बाद मुझे कोई ऐसे स्ट्रेस होगा। मुझे तो बल्कि खुशी होगी कि मैं रूरल कम्युनिटी लोगों के लिए काम करूंगा। अगर कोई ज्यादा प्रेशर की वजह से होगा तो मैं वीकेंड में उसी रूरल कम्युनिटी के लोगों के साथ बातचीत करके उनका जो नया नया जगह है वो घूम सकता हूँ। और वैसे भी मैम आजकल डिजिटल इंडिया में सारी जगह इंटरनेट कनेक्टेड है, मैं अपने फैमिली मेंबर के साथ कनेक्टेड रह सकता हूँ और मेरे फ्रेंड के साथ भी बात करके वीकेंड एंजॉय कर सकता हूँ। ऑलराइट। आपने डिजिटल इंडिया की बात करी, सो डू यू थिंक कि जो रिमोट एरियाज हैं, जैसे कि जो विलेजेस हैं, वहां पर सही तरीके से जो डिजिटल इंडिया है वो पहुंच पाया है कि मतलब डिजिटल इंडिया में मतलब ये है कि हर घर इंटरनेट, राइट? तो आपको लगता है कि सारे विलेजेस कवर्ड हैं और क्या सही तरीके से लोग उसका यूज कर पा रहे हैं रूरल एरियाज में, रिमोट एरियाज में? हम अगर बात करो हमारे एरिया में मैम पूरा गांव का इलाका है, वहाँ पे इंटरनेट नहीं था। लेकिन अभी मैम इंटरनेट का सुविधा यहाँ पे है और फार्मर्स लोग सही तरह से यूटिलाइज करते हैं मैम। जो भी डाउट होता है, उनको कोई भी असुविधा होता है, अभी मैं गया गाँव में, उन लोग डायरेक्ट अपने मोबाइल से चैट ये एग्री चैट बॉक्स में यूज करके वो अपना जो भी डाउट है वो क्लियर कर पाते हैं। मुझे लगता ओके। है मैम हमारे इलाके में तो ओके। आपने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में सुना होगा, सो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक स्कीम है जिसके तहत मैम इलेबरेट नहीं करूंगा, याद नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रेपो रेट के बारे में आपने सुना होगा, तो करंट रेपो रेट आपको मालूम है क्या है? मैम 5.25%। ऑलराइट। सो विश्वजीत, आपने काफी अच्छे से सारे आंसर्स दिए, जो जनरलाइज्ड क्वेश्चंस थे आपने वो अच्छे से टैकल किए, जो स्ट्रेसफुल वाली सिचुएशन थी, जो मैंने आपको एचआर राउंड का क्वेश्चन पूछा था, वो आपने बहुत अच्छे से आंसर किया, और बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज भी आपने ठीक से ही बताई। आपको थोड़ा सा स्कीम्स में कंफ्यूजन है, लाइक एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जब मैंने आपसे पूछा तो उसमें थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन थी। स्कीम्स आप बेसिकली देख लीजिएगा, क्योंकि ये कुछ बेसिक स्कीम्स हैं, जैसे किसान सम्मान निधि योजना है, मानधन योजना है, मत्स्य है, और ये एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, तो आपको स्कीम्स पे थोड़ा सा फोकस करना है। बाकी आप अच्छे से बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, आई कॉन्टैक्ट भी आप मेंटेन कर रहे हैं, एवरीथिंग इज गुड, बस स्कीम्स पे आप फोकस करिए। ठीक है।
मैम Alright, एक thank you. डाउट है तो मैं पूछ हाँ सकता जी, हाँ जी, हाँ जी। हूँ मैम? मेरा डाउट है कि मैम अगर पूछेंगे कि लॉन्ग टर्म गोल क्या है आपका तो क्या उसमें बताएंगे? मतलब स्केल 7 जनरल मैनेजमेंट मैनेजर होना है कि लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन होना है? मतलब कौन सा सही रहेगा आंसर? देखिए, इसका आंसर आप मिक्स्ड भी दे सकते हैं, ये सभी के लिए है। अगर लॉन्ग टर्म गोल पूछा जाए तो सबसे पहले आपको ये बोलना है कि मैं अपने आप को एक बहुत ही हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, कि मैं अपने आप को एक सक्सेसफुल बैंकर के रूप में देखना चाहता हूँ, जिसमें मैंने बहुत कुछ बैंक को कहते हैं ना एफर्ट्स या फिर कंट्रीब्यूशन रहा हो मेरा बैंकिंग इंडस्ट्री में। एंड सेकेंडली बीइंग एन एएफओ, मैं ये भी चाहता हूँ कि अगर मैं फ्यूचर में बहुत कुछ बन जाऊं तो मैंने फार्मर के अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ किया हो। सेकेंडली, पर्सनली अगर बात की जाए तो मैं अपने आप को अपने खुद के लिए और फैमिली के लिए एक सक्सेसफुल लाइफ और एक कंफर्टेबल लाइफ देना चाहता हूँ। तो यही है मेरे फ्यूचर गोल्स। फैमिली इसमें पर्सनल भी आपका कवर हो गया और आपका प्रोफेशनल भी कवर हो गया। थैंक यू ऑलराइट, मैम। ओके। सो नेम इज नॉट रिटन, ओप्पो CPH2। Yes, ma'am. Okay, so if you are comfortable, can we start? Yes, ma'am. All right, please introduce yourself. Ma'am, myself Priyadarshini. I'm from Pollachi, which is in Coimbatore district of Tamil Nadu, and I have completed my graduation in RBS Padmavati College of Horticulture, which is affiliated to Tamil Nadu Agricultural University. And my parents are my father is working as a junior assistant in a cooperative wholesale store, and my mother is a homemaker. Okay, uh, Priya, why do you want to become an AFO? Ma'am, I generally feel it is an very respectful and it is a purposeful job because every time I see the farmers, I have I think of giving such uh, uh, they are not aware of the schemes, and financially they are very much suffering. So when I see that, I really wanted to make them financially stable. Whatever I can do as an AFO, I have to make them fulfill their needs. So it is what I thought I have to be an AFO. Okay, what do you understand by financial inclusions? The financial products like about the loans, the scheme, everything which have to be given to all the sectors of the country. All the vulnerable groups have to know about what the bank is giving to them. So it is what the financial inclusion. Okay, all right. So, what do you understand by Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana? It is a micro irrigation scheme, ma'am, which is related to giving irrigation to all the places, like which also includes the components like per drop more crop, like water use efficiency, and that's all, ma'am, I know about it. Okay, and what do you understand by Kisan Mandhan Yojana, and what is the premium paid then in that? Manthan Yojana is a pension scheme which is given to the small and marginal farmers. They will be paying for up to 60 years, like 55 to 200 rupees, according to their. I don't know about that, but 55 to 200 rupees they'll be paying, and after 60 years, they'll be getting 3,000 per month. Okay, what do you understand by collateral? So collateral is a security, ma'am, which is given for the when we get the loan, we have to give some security to the bank that I will pay after getting after giving all the borrowed money, and I will get that collateral from you. Request. Okay, okay, Priya. Talking about digitalization in agriculture, do you feel that this term, as it is used very often, has this term been justified among the farmers? Some areas it is not very much reached, ma'am.
So we as an AFO have to reach that farmers also and give them what the awareness we get from the bank. Okay. How will you make them aware? Like you said that you will give awareness to them. How will you make them aware? The schemes which are all given by our central government, like Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, then every other related schemes, what are they give, we have to tell them by their bank. All right. Okay. What do you understand by money laundering? Ma'am, money laundering. Sorry, ma'am, I'm not aware of it. I'll update, ma'am. Okay. All right. All right. No issues. So Priya, it was a wonderful experience having talking to you because the knowledge of agriculture that you have, this is apt. You have studied schemes and everything precisely, and it can be seen with your answers in your answers. The only thing you have to concentrate a bit more on the banking terminologies. Like money laundering is the ongoing problem. As of now, it is really very famous. You can say it is a kind of illegal, the people who earn money illegally, and online frauds are also going on. That is what stands for money laundering, illegal earning of the money. And you have to focus a bit on that. Rest everything, agriculture knowledge, rest everything of yours is fine. Okay, ma'am. All right. So the next remaining is Deblina. Yes, ma'am. Good All right. afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Myself, Devlina Roy. I am from Durgapur, West Bengal. I have completed my graduation in BSc Agriculture from Institute of Agriculture Sciences, Banaras Hindu University. Coming to my hobbies, I like to sketch and I also like to listen to music and practice yoga in my free time. I live with my parents and my aim in life is to be a successful banker and contribute to rural development. Okay. Like you said that you want to contribute to rural development. So in today's scenario, how could you help in the development of rural areas and remote areas? Ma'am, in rural areas, generally, many farmers are there who do not get timely credit. They do not have knowledge about the schemes of government. So, as an AFO, I will definitely be in a position that I can make them aware about those schemes. I can help them provide timely credit. I can also provide them insurance schemes so that their income can be secure and more and more people can come into this farming sector. All right. Have you heard about soil health card and what is it used for? Soil health card. Ma'am, soil health card is used for assessment of soil. The soil health card comprises of 12 parameters, and it is used for addressing nutrient deficiencies and prevent farmers from overuse of any nutrient. And for precise nutrient management, this soil health card is used. Some of the parameters are pH, electrical conductivity, organic carbon, zinc, iron, manganese, etc. So All scheme right. was launched in 2015. All right. What do you understand by overdraft facilities in the account? Ma'am, by overdraft facility, I understand that when an account is short of money, still a person can take loan from that bank, even if his account runs short of money. So this facility is called overdraft facility. It is currently available for current account as well as savings account. Okay. All There right. is also a specified limit. Okay. And what the limit is that? In any scheme, can you tell in Uh, which this overdraft facility is being provided? yes, ma'am. In Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, the overdraft facility is up to rupees 10,000. All right. Okay. So what is the role of monetary policy in the economy? The monetary policy is implemented by Reserve Bank of India, and the main role of monetary policy is to control the supply of money in the economy so that the prices remain stable
and inflation do not increase too much, and economic sustainability can be ensured in the country. So this is the function of monetary policy. Okay, you used a term inflation. What do you mean by inflation? Ma'am, by inflation, we mean that people have lot of money in their hands and the prices of some goods and services increase abruptly, but there is not much supply of those goods and services, but those prices keep on increasing as there is more money in the hands of people. Okay, all right. What do you understand by contactless payment? Ma'am, by contactless payment, I understand digital banking. Nowadays, we can use digital banking such as United Payment Interface. Many platforms are there, such as PhonePe, Google Pay. Other than this, I also understand fund transfers such as NEFT, RTGS, etc. All right. All right. So, Deblina, each and every question that I asked, you didn't even fumble in even one question. And it was really beautiful of this thing that you know the answers of each and every question. You have prepared beautifully. The confidence that you are speaking with is apt. So, you need to maintain this, and the AFO will be yours. Just trust your instincts. Thank you, ma'am. Thank you so much. All right. So I wish you all the very best, everyone, for the interview. And okay, let's meet next time. Thank you so much.